Good morning, students. Myself, Major Komal Katyal, Department of Zoology, GK Gumani Government College, Bhinmal. In continuation on my lecture, phylum Cnidaria. Cnidaria is a acoelomate phylum. Now, what is the meaning of term nido? Nido meaning stinging nettle. Previously, a term was used, that is the Coelenterata. The meaning of Coelenterata is presence of coelentron or the gastrovascular cavity. Coelenterata is the term for the hollow guts. कहने का मतलब ये है, वर्तमान में हम फाइलम निडेरिया शब्द का प्रयोग करते हैं। पहले सीलेंट्रेटा शब्द का प्रयोग इस संघ के लिए किया जाता था। आजकल भी कुछ वैज्ञानिक सीलेंट्रेटा और निडेरिया को पर्यायवाची के रूप में प्रयोग करते हैं। अभी पहले जो सीलेंट्रेटा था उसको हमने पॉरीफेरा, निडेरिया और टीनोफोरा के अंदर विभाजित कर दिया है। तो आज हम जिस संघ निडेरिया की बात कर रहे हैं उसके अंदर केवल निडेरियंस ही हैं, पॉरीफेरंस नहीं है और टीनोफोर्स भी नहीं है। They are characterized by presence of radial symmetry. The mouth is present at the oral end and it is surrounded by the tentacles, as you can see in the diagram also. There is only one opening into and out of the gastrovascular cavity. There is cell tissue grade of body organization. The cnidocytes that discharge nematocysts, the stinging cells, they are basically responsible for paralyzing their prey. Shooting of nematocytes is just like shooting a dart on the dartboard. There are two basic body forms present in the phylum Cnidaria. One, the polyp form, which is the attached form, and the second, the medusa form, which is the free swimming form. And both these forms are diploid. There are presence of two germ layer, and in between the two germ layer there is presence of the mesoglia, and gradually as we move from the lower coelenterate or cnidarians to the higher coelenterate, it means from hydrozone to anthozone, this mesoglia becomes more cellular. So in the higher cnidarians they are triploblastic. There is presence of the third germ layer, that is the mesoderm. Primitive nerve net in the form of some nerve cells is present in the cnidarians, the characteristic features for coordination. Now, what is the radial symmetry? रेडियल या अरीय सममिति से मतलब है कि जो शरीर है, शरीर में ओरल एब ओरल एक्सिस होती है, एक अक्ष होता है, मुख अपमुख अक्ष जिसको बोलते हैं, और अगर हम उसके द्वारा जंतु को दो बराबर विभागों में विभाजित करना चाहें तो कई ऐसे अक्ष बनते हैं जिसके द्वारा हम उसको दो बराबर भागों में विभाजित कर सकते हैं। This is the position of mouth. You can see exactly in the center is the mouth, which is surrounded by the tentacles, and these tentacles bear nematocytes. Now let us discuss about the two body forms which are characteristic feature of cnidarians. One, the polyp form, which is sessile and attached form. You can see there is presence of a terminal mouth surrounded by tentacles, the centermost gastrovascular cavity, outermost epidermis, innermost gastrodermis, and cementing mesoglia is there. While the medusa, which is the free swimming type, is basically the upside down polyp, where you can see similarly the epidermis, gastrodermis, and the cementing mesoglia, and there is presence of the gastrovascular cavity. The tentacles are present. Just you can imagine that if a
umbrella or a bell is there, and at the corner or the ridges of the umbrella or bell the tentacles are present, which bears the stinging cells or the nidoblasts. कहने का मतलब ये है कि जो मेडुसा है वो अपसाइड डाउन, मतलब अगर हम पॉलिप को उल्टा कर दें तो बिल्कुल मेडुसा की तरह उसकी संरचना दिखाई देती है। मेडुसा में नीचे की तरफ मुख दिखाई देता है, जबकि पॉलिप के अंदर ऊपर की तरफ मुख दिखाई देता है। बाकी संरचनाएं लगभग दोनों में समान होती हैं। वही एपिडर्मिस होती है, वही गैस्ट्रोडर्मिस होती है, और उनके बीच में एक मीसोग्लिया पाई जाती है। This is the structure of cnidocyte before and after the discharge. You can see there is presence of the nematocyst, the operculum or a lid is there, and the cnidocyte has the nucleus when it is undischarged in condition. Whenever it is discharged, the tube-like structure comes out and it is thrown at the prey, because basically the coelentrates feed on other smaller animals present in the water. So they actually throw these nematocysts, and these nematocysts contain certain venomous fluid, and this venomous fluid, just like a syringe, transfer the venomous fluid into the body of the prey, thereby paralyzing the prey. The commonly you can see in the Portuguese man of war, the Physalia, which were present in the sea around Portugal, and large number of these Physalia are responsible for killing the enemy's soldier. The three germ layers, the epidermis, the ectoderm, the gastrodermis, which is the endoderm surrounding the gastrovascular cavity, मतलब जठर संवहनी गुहा के चारों तरफ एक स्तर होता है गैस्ट्रोडर्मिस का, and in between these two the mesoglia, the non-living jelly-like layer. So they have a primitive type of gut, which is the coelentron, and it is not the true gut because it has only one opening which is responsible for intake as well as outgo of the food material. This slide is showing the cnidarian body wall. You can easily observe the presence of all the structure like epidermis, mesoglia, the gastrodermis, the sensory cells, nerve cells, the musculature, mesentery portion, and the longitudinal muscles. The other characters include absence of coelom, respiratory circulatory system. जो देह गुहा है, श्वसन तंत्र है, परिवहन तंत्र है और उत्सर्जन तंत्र है, ये सभी सीलेंट्रेटा के अंदर अनुपस्थित होते हैं. The epithelial muscle cells and endothelial muscle cells are acting as the musculature. I already told you there is only one opening of the coelentron. Anus is absent. Digestion is intracellular as well as it takes place in the gastrovascular cavity. Now the question arises why we call it as gastrovascular cavity. Because it performs two functions. One function, the gastric function, that is the digestion, and second, the vascular. It means the transportation of the food material. The sensory structures are the ocelli and statocysts, responsible for maintaining the balance of the nematophore or the upside down polyp, that is a medusa, when medusa is freely floating or swimming in the water. The asexual reproduction is by budding. You can easily observe such kind of budding in hydra, or by fission. It can also be observed in hydra. As far as the sexual reproduction is concerned, because they are hermaphrodite mostly, it means monoecious and dioecious forms are there. The development is always indirect, which includes a free swimming ciliated planula larva, which is responsible for the distribution. This is how the nerve cells are distributed in a whole animal, forming the nerve net. Now this slide shows the generalized cnidarian
लाइफ साइकिल्स। इस स्लाइड के द्वारा आप देख सकते हैं कि किस तरह से निडेरिया के अंदर जीवन चक्र पूर्ण होता है। पॉलिप के अंदर बडिंग द्वारा मेडुसा उत्पन्न हो रहे हैं, तो यहाँ पर अलैंगिक जनन हो रहा है। और जो मेडुसा है, मेडुसा के अंदर जो जनन होते हैं उनसे अंडे और शुक्राणु का निर्माण होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। निषेचन के पश्चात युग्मनज या जाइगोट का निर्माण होता है और ब्लास्टुला के पश्चात एक स्वतंत्र जीवी प्लेनुला लार्वा बनता है जो वितरण में सहायता प्रदान करता है और उसके पश्चात फिर किसी एक स्थान पर ये सेटल हो जाता है और पॉलिप अवस्था के अंदर परिवर्तित होता है। Now, the characteristic regular alternation between the asexual polyploid stage and a sexual medusoid stage, the true alternation of generation is absent in cnidarians. So, thus, there is a diploid asexual hydroid phase alternate with another diploid sexual medusoid phase. This phenomenon of alternation between two diploid phases is referred as metagenesis. तो दो जो डिप्लॉयड अवस्थाएं होती जीवन चक्र के बीच में, उसमें जो ये पीढ़ी एकांतरण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मेटाजेनेसिस बोलते हैं, क्योंकि ये वास्तविक पीढ़ी एकांतरण नहीं होता है। This slide shows the how metagenesis is taking place in the Coelenterata. You can see the two sexual form, the female and the male medusa. The male medusa releasing the sperm and the female medusa releasing the ova. Fertilization is taking place, and after fertilization there is formation of a diploid zygote which undergoes embryonic development forming blastula and then planula. This planula ultimately settles down after finding a suitable place into young polyp, and when the young polyp fully developed, it starts for reproducing the medusa through asexual reproduction. कहने का मतलब यह है कि नर व मादा मेडुसा, नर से नर युग्मक, मादा से मादा युग्मक बनते हैं। दोनों के बीच निषेचन की प्रक्रिया होने के पश्चात युग्मनज का निर्माण होता है, जिसमें परिवर्धन के पश्चात ब्लास्टुला मतलब कोरक और अंत में प्लेनुला लार्वा अवस्था बनती है। और ये प्लेनुला अवस्था लार्वा में असंख्य सीलिया या पक्षमाव उपस्थित होते हैं, फलस्वरूप वो बहुत तेजी से तैरता है और एक सूटेबल सबस्ट्रेटा मतलब एक उचित स्थान जब तलाशने के पश्चात वहां पर वो स्थानबद्ध पॉलिप के रूप में रूपांतरित हो जाता है और जब पूरी तरह से वो परिपक्व हो जाता है तो उसमें अलैंगिक जनन होना प्रारंभ हो जाता है। Now the term polymorphism, the occurrence of more than one type of structurally and functionally different individual within a species is known as the polymorphism. बहुरूपता, जंतु का या जंतु की जाति में एक से अधिक प्रकार के जंतु का पाया जाने जो संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से भिन्न होते हैं, बहुरूपता कहलाता है। This ensures an efficient division of labor between the several individuals, and many colonial hydrozoans will contain more than one type of individual, which are called zooids. All these zooids are modification of two basic coelenterate type, the polyp and the medusa. तो जो निवी हाइड्रोजोन जंतु हैं उनके अंदर ये जीवक या जॉइड होते हैं और ये सारे जॉइड्स क्या हैं? दो जो बेसिक फॉर्म है पॉलिप और मेडुसा उसका ही रूपांतरण होते हैं। This slide shows the polymorphism in various type of coelenterate, one in Obelia, then Hydroactinia, Vallela, Physalia showing a single cormedium and a generalized Calicophoran, Siphonophore hydrozoan. So this is all about the first part on Cnidaria. इसके साथ ही मैं अपना व्याख्यान यहीं पे समाप्त करता हूं, जिसमें हमने निडेरिया के सामान्य लक्षण, उसका जीवन चक्र और बहुरूपता के बारे में अध्ययन किया।
धन्यवाद।